Alléluia, alléluia. Qui veut aller dans cette nouvelle Jérusalem? Dis à ton voisin, je vais y aller. Je dois y aller. Le Seigneur m'a réservé une maison dans ce lieu et je vais y aller. Peu importe ce que ça va me coûter, alléluia, je vais y aller. Je vais y aller, alléluia. Même si c'est à enfant, je vais y aller. Même si c'est avec un pied coupé, je vais y aller. Parce que c'est un lieu, alléluia, où il n'y a plus de pleurs et de graissements dedans. C'est un lieu où toutes les larmes vont être essuiées. C'est un lieu où on marche sur l'or. Amen. C'est un lieu où le Seigneur sera notre lumière. C'est un lieu où les ténèbres n'existeront plus. C'est un lieu où il n'y aura plus de pleurs. C'est un lieu où il n'y aura plus de soucis. Mais c'est un lieu où il y aura la paix et la paix en abondance. C'est un lieu où les arbres produiront 24 sur 24 et 12 mois sur 12. C'est un lieu, alléluia, où toutes les maisons sont alignées. Alléluia. C'est un lieu où l'Éternel est assis et les eaux vives coulent. C'est un lieu où tu n'as pas soif. C'est un lieu où tu n'as pas faim. C'est un lieu où tu voyages, alléluia, sans pourtant avoir besoin d'un billet d'avion. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, et venez acheter sans rien payer. Venez manger sans pourtant travailler. C'est un lieu, alléluia, où l'Éternel nous promet la vie, et la vie est dans l'éternité. Oh, je vais y aller. Oh, peu importe ce que ça va me coûter, je vais y aller. Avec ma famille, je vais y aller. Même s'ils doivent mourir pour y aller, Dieu va les tuer, mais ils vont y aller d'abord. Alléluia. Dans le nom de Jésus, il faut être déterminé pour l'éternité. La parole de Dieu dit, le royaume de Dieu depuis Jean-Baptiste, seuls les violents s'en emparent. C'est ceux-là qui se font violence sur eux-mêmes, ceux-là qui se réunissent eux-mêmes, ceux-là qui disent, moi et ma maison, nous allons y aller. Alléluia. Je ne sais pas chez toi comment ça se passe, mais il faut que tu décides d'y aller. Amen. Il faut que tu dises, je dois y aller. Ce n'est pas le moment, alléluia, d'être froid, mais c'est le moment de dire, je vais tout donner pour y aller. Peu importe ce que le Seigneur va me demander, je vais y aller. Alléluia. Hier, nous étions en train de partager avec mon épouse et mon frère Jean-Yves par rapport au jeune homme riche. Dans certaines versions, c'est dans le livre de Marc 10, 21. On va le lire pour voir la détermination de ce que le Seigneur met devant nous. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Marc 10, 21. On va juste le partager, ensuite on va passer à la parole du Seigneur. Alléluia. Ok, on va lire à partir un peu plus haut. À partir du verset, allons-y à partir du verset 17. Voici la parole de Dieu dit ceci. Je vais lire de la version Osterval. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'étant mis à genoux devant lui demanda, bon maître, que quelqu'un dise bon maître. Bon maître, vas-y frère Déo. यहाँ लेखिएको छ येशू बाटोमा जाँदै हुँदा एकजना मानिस दगुरेर आएर उहाँको अगाडि घुँडा टेक्यो र उहाँलाई सोध्यो हे असल गुरु सबैले भन्नुहोस् असल गुरु Amen. Aसल गुरु, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Bon maître, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्ने? Amen. Laissez-moi juste vous mettre l'image ici. म तपाईलाई एउटा चित्र देखाउँछु. C'est un juif. पहिलो यो केटो यहुदी थियो. C'était un enfant de la promesse. भन्नु खोजेको प्रतिज्ञा गरेको छोरा. Alléluia. Alléluia. Mais il n'était pas héritier de la promesse.
तर ऊ त्यो प्रतिज्ञा स्वर्ग जान सक्दैन C'est थियो। un fils d'Abraham अब्राहमकै पुत्र à qui la promesse leur avait été faite, जसलाई प्रतिज्ञा दिएको थियो, mais il ne possédait pas encore la promesse. तर ऊ प्रतिज्ञा पाइसकेको थिएन। Tu peux être dans l'église, तपाईँ मण्डलीमा हुन सक्नुहुन्छ, tu as reçu la promesse de l'éternité, परमेश्वरको अनन्तको प्रतिज्ञा पाउनुभयो, mais sache que tu ne l'as pas encore. तर जान्नुहोस् तपाईले पाइसक्नु भएको छ। Alléluia. हालेलुया। Et regardez ce que le... Amen. आमेन। Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. यहाँ लेखेको छ, तिमी मलाई किन असल भन्छौ? एकमात्र परमेश्वर बाहेक अरू कोही असल छैन। Amen. आमेन। Jésus n'a pas refusé de se faire appeler bon, येशूले मलाई असल नभन भन्नु भएन, mais il a juste dit, उहाँले भन्नुभयो celui que tu appelles bon là, जसलाई तिमी असल भन्छौ c'est Dieu qui est bon. त्यो चाहिँ परमेश्वर मात्र असल Jésus était en हुनुहुन्छ। train de lui donner la révélation de un seul Dieu. परमेश्वरले एकमात्र परमप्रभुको त्यहाँनिर उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो। Dieu seul est bon. परमेश्वर मात्र असल Il n'a हुनुहुन्छ। pas dit ne m'appelle pas bon, परमेश्वरले भन्नु भएन मलाई असल नभन mais भनेर। juste pour te dire, तपाईलाई भन्नको लागि il n'y a que Dieu कि यहाँ चाहिँ qui परमेश्वर sera bon. मात्र असल हुनुहुन्छ। Donc si tu cherches la bonté ailleurs, यदि तपाईँ परमेश्वर छोडेर अरूतिर असल कुरा खोज्नुहुन्छ, sache que l'ennemi aussi a des trésors. मलाई भन्न दिनुहोस् कि दुश्मनको पनि धन सम्पत्ति Il a dit छ। au Seigneur, prosterne-toi seulement devant moi et je te donnerai tout ceci. मेरो अगाडि घोटो पर दण्डवत गर्नु, म तँलाई यो सबै Seigneur lui a कुरा dit quoi? दिन्छु। परमेश्वरले के भन्नुभयो? Ah, tu vas adorer Dieu seul. परमेश्वरको मात्र प्रशंसा गर्नु भन्नु। Donc la personne que tu dois adorer, जुन मान्छेलाई तपाईँले que ce soit Dieu. Il est venu et il s'est prosterné. यो मान्छे यतिखेर En d'autres termes, ce jeune homme était un adorateur भन्नुपर्छ ऊ प्रशंसा गर्ने du मान्छे seul vrai Dieu. एउटै परमेश्वरको। Mais le Seigneur lui a dit, परमेश्वरले भन्नुभयो malgré la connaissance du seul vrai Dieu dans ta vie, तैँले चिने पनि परमेश्वरलाई il y a des choses que tu dois faire. कतिवटा कुरा तैँले गर्नुपर्छ। Malgré la connaissance que Jésus-Christ est le seul vrai et l'unique Dieu, येशू ख्रिस्ट एकमात्र परमप्रभु भए पनि cela ne suffit pas यति नै काफी हुँदैन pour aller dans l'éternité. अनन्त जीवनमा पुग्नलाई। Malgré la connaissance, malgré le fait qu'on est baptisé au nom de Jésus-Christ, तपाईको ज्ञानबाट येशूको नाममा Rempli du गरे पनि Saint-Esprit. पवित्र आत्मा पाए पनि ça ne suffit pas. यति नै काफी हुँदैन। Alléluia. Alléluia. C'est bon de faire cela. राम्रो कुरा हो त्यो C'est गर्न, un prérequis. त्यो चाहिन्छ, Mais il y a encore plus तर त्योभन्दा बढी que गर्नुपर्छ l'Éternel attend de nous. जुन परमेश्वरले हामीबाट पर्खिनुहुन्छ। Alléluia. हालेलुया। Il lui dit Dieu seul est bon. उहाँले भन्नुभयो परमेश्वर बाहेक अरू कोही असल छैन। Le Seigneur lui dit, tu connais les commandements, ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne commets point de fraude, honore ton père et ta mère. Dieu lui a donné 6 commandements. परमेश्वरले यहाँ 7 वटा आज्ञा दिनुभयो। यहाँ भन्नुभयो तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नछोड्नु, झुटो गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्ना बुवा र आमालाई आदर गर्नु। Amen. आमेन। 6 commandements. 6 वटा आज्ञा परमेश्वरले भन्नुभयो। Dieu lui a dit, bon, tu connais que Dieu seul est bon. परमेश्वरले भन्नुभयो तँलाई थाहा छ कि परमेश्वर मात्र असल हुनुहुन्छ। Tu es un fils d'Abraham. त अब्राहमकै पुत्र होस्, Tu connais les promesses. तँलाई प्रतिज्ञाहरू थाहा छ। Voici ce que tu dois faire. अब तैँले यसो गर्नुपर्छ, Obéis au commandement. आज्ञालाई पालन गर। Amen. आमेन। Que quelqu'un dise obéis d'abord. कसैले भन्नुहोस् आज्ञा पालन गर्नु। L'obéissance. Obedience. ओबिडियन्स, आज्ञा पालन गर्नु। Aria parla con nous. आमेन। Est meilleur que les sacrifices. आमेन। परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ बलिदान भन्दा असल हो। Bolidan mandama sao. आमेन। Amen. आमेन। Je vous le dis. म तपाईँलाई भन्छु Donc les commandements sont plus importants परमेश्वरको आज्ञाहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्। que tout ce que tu peux offrir à Dieu. तपाईँ सबै कुरा भन्दा पनि बढी दिनुपर्ने Il dit आज्ञा हो। au verset 20. यहाँ 20 मा भनेको Il छ, répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. उसले भने अनि तिनले उनलाई भने गुरुज्यू यो सबै म मेरो युवादेखि नै पालन गरेको छु। Alléluia. हालेलुया। J'ai observé. Quelqu'un dit j'ai fait cela.
कसैले भन्नुहोस् मैले पहिले गरेको Amen. मैले पहिले Peut-être गरेको। tu es ici सायद तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ parce que tes parents ont toujours été dans किनभने l'église. तपाईँको बाउमा जहिले पनि सेवामा जाने हो Peut-être que tu as reçu le सायद Saint-Esprit तपाईँले पवित्र आत्मा पाउनुभयो parce que tu viens à l'église. किनभने तपाईँ मण्डलीमा आउनुहुन्छ Peut-être que tu te fais baptiser सायद तपाईँले बक्तिस्मा parce गर्नुभयो que tout le monde le fait à किनभने l'église. सबैले बक्तिस्मा गरिरहेका थिए Peut-être que tu es ici सायद तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ parce que ce sont tes parents qui t'ont amené ici. किनभने तपाईँको बाउआमाले ल्याए Alléluia. हालेलुया Mais laissez-moi vous dire ceci. तर मलाई यो भन्न दिनुहोस् Ce n'est pas encore assez. यति नै काफी छैन Alléluia. हालेलुया Ce n'est pas encore suffisant. यति नै काफी छैन Et Jésus jetant les yeux sur lui, अनि येशूले त्यसलाई हेरेर भन्नुभयो il l'aima et lui dit, il te manque une chose. भन्नुभयो येशूले त्यसलाई भन्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो Alléluia. तिमीलाई एउटा आज्ञाको एउटा कुराको अभाव छ Il te manque une chose. एउटा कुरा पुगेको छैन Donc, si nous voyons la vie de ce jeune homme, यदि हामी यो मान्छेको जीवन हेर्छौँ c'était un fils de la promesse. एउटा प्रतिज्ञाको छोरा थिए C'était quelqu'un qui connaissait le seul vrai Dieu. एउटै मात्रै परमेश्वरलाई चिन्थे C'était quelqu'un qui louait le seul vrai Dieu. एउटै मात्रै परमेश्वरको महिमा गर्थे C'était quelqu'un qui obéissait au commandement du seul vrai Dieu. एउटै मात्रै परमेश्वरको आज्ञा पनि पालन गर्थे C'était quelqu'un que le seul vrai Dieu aimait. एउटै मात्रै परमेश्वरलाई माया गर्ने मान्छे Mais il lui manquait une chose. तर अझै पनि एउटा कुरा पुगेको थिएन Alléluia. हालेलुया Et le Seigneur lui a dit अनि ceci. परमेश्वरले यसो भन्नुभयो Va, जा vends tout ce que tu as. यहाँ भन्नुभयो जा गएर बेच जे तोरमा सबै छन् Tout. बिक्री गर सबै Vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. उहाँले भन्यो जाऊ र तिम्रो जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गीयमा सम्पत्ति मिल्नेछ तिमीलाई Tu auras un trésor dans le ciel. तिमीलाई स्वर्गीयमा सम्पत्ति मिल्नेछ Après cela, त्यो पछाडि viens, आऊ suis-moi. मेरो पछि लाग Et maintenant, अनि charge-toi de la croix. आफ्नो क्रुस बोक Jésus n'était même pas encore crucifié. येशू त्यतिखेर क्रुसमा टाँगिनु भएको थिएन Et il avait déjà dit, तर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो si यदि tu veux aller au ciel, स्वर्ग जानु छ भने tu dois tout laisser sur la terre. सबै कुरा हामीले संसारमा छोड्नुपर्छ Et tu dois porter र la croix du Seigneur. ख्रिस्टको क्रुसलाई बोक्नुपर्छ Jésus a porté la croix de l'humanité. येशूले संसारको मानिसको क्रुसलाई बोक्नुभयो Si tu veux y aller, यदि हामी स्वर्ग जान tu dois चाहन्छौँ porter la croix de l'humanité comme lui l'a porté. मानव जातिको क्रुसलाई बोक्नुपर्छ Là, tu seras son véritable तब disciple. चाहिँ हामी साँच्चीकै उहाँको चेला बनिन्छौँ Alléluia. हालेलुया Jésus a donné sa vie येशूले आफ्नो जीवन दिनुभयो afin que nous puissions avoir la vie. कि हामीले जीवन पाऊँ भनेर Jésus a donné son corps येशूले आफ्नो शरीरलाई दिनुभयो pour que nous puissions avoir un corps कि aussi. हामीले एउटा शरीर पाऊँ भनेर Laisse-moi te dire, मलाई भन्न दिनुहोस् c'est ce que toi aussi tu dois donner. त्यही चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ Alléluia. हालेलुया C'est pour cela, यसै कारण seuls les violents लडाई गर्ने लडाकुहरू s'emparent du royaume des cieux. लडाकु गर्नेहरू मात्रै स्वर्गीय जान Ici, dans सक्छ cette version de Louis II, यहाँनिर यो पदमा ils ont coupé la croix. उनीहरूले क्रुसलाई काटेको छ Amen. आमेन Ajoute dans ta Bible, आफ्नो बाइबलमा जोड्नुहोस् il manque une partie. एउटा भाग Si tu as Louis पुगेको II, छैन il manque cette partie. यो भाग पुगेको Il छैन a dit, dans Louis II, il dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis suis-moi, puis viens et suis-moi. Point. Mais Jésus n'a pas dit, suis-moi seulement. परमेश्वरले भन्नु भएन मलाई मात्रै पछ्या C'est quoi suivre Jésus? यसलाई पछ्याउनु भनेको के हो Tu viens à l'église, तपाईँ मण्डली आउनु toutes les activités qu'on fait, tu fais. जे पनि मण्डलीमा गर्छन् त्यो गर्नु Mais ce n'est pas tout. यति नै होइन Jésus येशू s'attend que toi, ले चाहनुहुन्छ कि tu तपाईँ portes une portion de son fardeau. येशूको बोझ तपाईँले बोकेको चाहनुहुन्छ Il dit, venez à moi. उहाँ भन्नुहुन्छ म कहाँ आऊ Vous êtes fatigué et जतिजना chargé. थाकेका र बोझले दबिएका Et je छौ vous donnerai du र म repos. तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु Prenez mon joug. मेरो जोहा बोक Amen. आमेन Il est doux त्यो et il नरम est léger. र हलुको छ
La croix qu'il a portée n'était pas facile. उहाँले बोकेको क्रुस सजिलो थिएन, Mais c'est la joie qui venait après. तर त्यो पछाडि आउने आनन्द, C'est pour cela qu'il a porté avec joie. यसै कारण त्यो क्रुसलाई खुसीसँगले बोक्नु भयो। Alléluia. हालेलुया। Nous avons un travail. हाम्रोमा एउटा काम छ, Et le travail, c'est de porter la croix du Seigneur. त्यो हाम्रो काम चाहिँ ख्रिस्टको क्रुसलाई बोक्ने Si हो। nous voulons y aller, यदि हामी जान चाहन्छौँ, nous devons nous battre हामीले लडाइँ गर्नुपर्छ pour y aller. पुग्नका लागि। Ce n'est pas en croisant les bras qu'on va y यो aller. चाहिँ हात बाँधेर बस्दा जाने Mais nous devons होइन, travailler तर हामीले काम गर्नुपर्छ dans sa volonté. उहाँको इच्छामा। Alléluia. हालेलुया। Nous devons nous dépouiller d'abord de हामीले tout. आफैलाई होच्याउनु पर्छ। L'appel de Dieu परमेश्वरको बोलावट dans ta vie, तपाईको जीवनमा si tu veux savoir, यदि जान्न चाहनुहुन्छ, ça se retrouve dans les choses que tu aimes. तपाईले मन पराउने कुराहरूमा पाउनुहुन्छ। Si tu ne t'es pas encore dépouillé de ce que tu aimes, यदि तपाई आफूलाई मन पर्ने कुरादेखि टाढा जानुहुन्न, tu n'as pas encore commencé l'appel de Dieu dans ta vie. तपाईले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको बोलावट जान्नु पनि भएको छैन। Dieu a appelé Abraham. परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। Il a dit quitte ta maison, उहाँले भन्नुभयो तेरो घरलाई छोड, quitte ton père, la maison de ton père. तेरो quitte बाउ tout. आमाको घरलाई छोड, सबै छोड र केही Abraham a नलिकन suivi अब्राहमले यसुलाई la पछ्याए, promesse. परमेश्वरलाई पछ्याए त्यो प्रतिज्ञालाई। Amen. आमेन। Et cela lui a été imputé à justice. र त्यसले धार्मिकतामा डोर्यायो। Mais laissez-moi vous dire, ce n'était pas tout. मलाई भन्न दिनुहोस् यति नै काफी थिएन। Même quand Abraham a obtenu sa promesse, जब अब्राहमले आफ्नो प्रतिज्ञा पाए, Dieu lui a dit, il y a encore quelque chose que tu aimes. परमेश्वरले भन्नुभयो तँ अझै केही कुरा माया गर्छस्। Amen. आमेन। Vous savez, nous venons toujours à l'église pour une cause ou une raison particulière. तपाईलाई थाहा छ हामी मण्डलीमा आउँछौँ एउटा कारण, Le केही jeune homme कारणको riche, लागि। lui, il était à l'église parce que ses parents l'avaient amené à l'église. Il obéissait parce que il avait appris à obéir यो de जवान ses मान्छे parents. मण्डलीमा थियो, आफ्नो बाउमा मण्डली जान्थे र बाउमाले सिकाएको थिए, Mais तर il a obéi au commandement. उनले आज्ञाहरू पालन Et गरे। Dieu l'a fait prospérer. परमेश्वरले त्यसलाई धनी बनाउनु भयो। जवान Amen. थियो र धनी थियो, Il était riche ऊ धनी थियो parce qu'il obéissait au किनभने commandement. उनले यी आज्ञाहरू पालन गर्थे। Mais regardez, तर हेर्नुहोस्, Abraham aussi अब्राहम a पनि suivi le Seigneur. परमेश्वरलाई पछि Il a obéi पालन गरे et il a obtenu sa promesse. अनि उनले आफ्नो प्रतिज्ञा पाए। Abraham, son problème, ce n'était pas l'argent. अब्राहमको समस्या पैसा थिएन, Ce n'était pas la longévité. कति लामोसम्म जिउँछु भन्ने थिएन, Son problème, c'est qu'il n'avait pas de postérité. अनि उसको समस्या थियो कि ऊ पछाडिको सन्तान थिएन। Sarah, sa femme, était stérile. Il avait 75 ans. सारा 70 र 5 वर्ष पुगेका थिइन् र उसले नानी जन्माउन सक्दिन थिइन्। À l'âge de 100 ans, 100 वर्ष Dieu पुग्दा lui donne un fils. परमेश्वरले एउटा पुत्र दिनुभयो Et là, il est comme, ah, merci. र त्यो पछाडि भने प्रभु धन्यवाद। Il était satisfait en long jour. ऊ खुसी थिए Et il était aussi satisfait en richesse. C'était le terrain avec Lot. किनभने ऊ लतसँग झगडा गर्थे त्यो Quand जमिन। Abraham est allé défendre Lot, जब लतलाई बचाउन il a गए dit, je ne prends pas $1. उसले भने म 1 रुपैयाँ Mais tout ce que लिन्न। vous allez me donner, ça veut dire qu'il était bien. भन्नु खोजेको Il ne pouvait pas. उसलाई पैसा चाहिएको Il थिएन, n'était pas un mendiant. उसलाई कुनै पैसाको जरुरत थिएन। Dieu est venu même prendre la dîme chez Abraham. परमेश्वरले चाहिँ आएर भेटी लिनुहुन्थ्यो La dîme de la dîme. अनि त्यो भेटीको पनि भेटी। Amen. आमेन। Ça veut dire qu'Abraham était riche. भन्नु खोजेको अब्राहम धेरै धनी Mais il थिए, y a quelque chose तर केही कुरा que Dieu a demandé à Abraham. परमेश्वरले अब्राहमलाई माग्नुभयो। Dieu a demandé à Abraham son fils, परमेश्वरले आफ्नो पुत्र माग्नुभयो, l'unique. एक मात्र। Il précisait l'unique, उहाँले भन्नुभयो celui एक que tu मात्र, aimes. जसलाई तँ माया Il aurait गर्छस्। pu offrir les esclaves. उहाँले नकुरहरू माग्न Quand सक्नुहुन्थ्यो, Dieu lui a dit ton fils, किनभने परमेश्वरले भन्यो तेरो छोरा। il a pensé tout de suite à Ismaël. उसले एकैचोटि इस्माइललाई सोचे, Je le sacrifie gratuit. ए म इस्माइललाई सित्तैमा बलि गर्छु। Dieu a dit celui. परमेश्वरले भन्नुभयो जसलाई तँ माया गर्छस्, Alléluia. तेरो एकमात्र पुत्र। Et laissez-moi vous dire, अनि मलाई भन्न दिनुहोस्, Dieu est un Dieu jaloux. परमेश्वर आरिस गर्ने परमेश्वर Il y a un हुनुहुन्छ। commandement एउटा आज्ञा que Dieu n'a pas donné ici, जुन परमेश्वरले यहाँ दिनु भएन, mais que Dieu a exprimé. तर परमेश्वरले देखाउनु Le भयो plus grand de tous les commandements. सबैभन्दा ठुलो आज्ञा। Alléluia. Il Alléluia. ne l'a pas cité en premier. यहाँ न पहिला भन्नु भएन, C'est parce qu'il a exprimé après. किनभने त्यो पछाडि Il a dit celui que tu अन्तिम aimes.
जसलाई तँ माया गर्छ Aime-moi en Moi, premier plus que lui. माया गर तेरो छोरालाई भन्दा Tu पहिला aimeras l'Éternel तेरो परमेश्वरलाई de tout प्रेम ton गर्नु cœur, आफ्नो सारा de हृदयले toute ta force, आफ्नो सारा बलले de toute ton âme. र आफ्नो सारा प्राणले Alléluia. हालेलुया Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. र आफ्नो छिमेकीलाई आफ्नो छेउको मान्छेलाई आफू जति Quand on a माया demandé au गर्नु। Seigneur quel est le plus grand de tous les commandements, अनि जसरी उनीहरूले सोधे परमेश्वर सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो qu'est-ce que le Seigneur a dit? परमेश्वरले के भन्नुभयो Le premier de tous les commandements, सबैभन्दा c'est ठुलो आज्ञा tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout, de tout, de tout. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. आमेन यहाँ सबैभन्दा ठुलो आज्ञा भनेकै परमप्रभुलाई आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा बलले सोचले दिमागले सबै कुराले माया गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफू चाहिँ प्रेम गर्नु Mais pourquoi il n'a pas dit ça ici au jeune homme? यो धनी मान्छेलाई यो आज्ञा चाहिँ किन भन्नु भएन Le jeune homme, il a commencé, il dit, ne commets point d'adultère. जवान मान्छेले भन्यो म Ne tue point, ne dérange point. म मार्दिन म ढार्दिन Amen. आमेन Ne dis point de faux témoignage, ne commets point de faux d'honneur ton père et ta mère. यहाँ भनेको छ बाबामाको आदर गर्नु झुटो गवाई नदिनु व्यभिचार नगर्नु Mais le plus grand des commandements तर सबैभन्दा योभन्दा ठुलो était आज्ञा ancré à l'intérieur de lui-même. ऊ भित्र पसेको थियो Et c'était la chose qui lui manquait. अनि त्यो कुरा चाहिँ पुगेको थिएन Alléluia. हालेलुया Regardez ce que le Seigneur dit. हेर्नुहोस् परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ Il dit maintenant, अब उहाँले भन्नु अब prends tout ce que tu as, परमेश्वरले भन्यो जे ce qui fait le désir de ton cœur, तिम्रोमा जे छ तिम्रो हृदयलाई ce जे qui कुराले prend la खुसी place मान्छ dans ta vie. तिम्रो जीवनमा जे कुराले ठेउ लिन्छ Vends. गएर बेच Il ne dit pas vends et garde. भन्नु भएन बेच र त्यो पैसा राख Parce qu'il aurait pu vendre, उसले बेच्न सक्थे prendre un gros sac à dos ठुलो झोला et बोक्यो suivre le Seigneur र avec son paquet. परमेश्वरलाई त्यो पैसा बोकेर पछ्याउन सक्थे Abraham aurait pu continuer de suivre Dieu अब्राहमले Avec la पछ्याउन सक्थे promesse त्यो प्रतिज्ञा et लिएर les richesses. र धन सम्पत्ति Là, बोकेर il a tout. अब चाहिँ उसकोमा सबै छ Amen. Amen. Ça allait être facile. Abraham n'avait plus de challenge dans sa कुनै vie. च्यालेन्ज आउँदैन Il थियो avait déjà tout reçu. उसकोमा सबै थियो Mais laissez-moi vous dire. मलाई भन्न दिनुहोस् Il a dit, tu vends उहाँले भन्नुभयो तँ बेच et tu donnes aux pauvres. र गरिबहरूलाई दे त्यो पैसा Amen. En fait, tu te débarrasses de ce qui est précieux. भन्नु खोजेको जे तँलाई मनपर्छ त्यो Maintenant, tu तँलाई हटा। utilises ce de quoi tu t'es débarrassé र जुन कुरा तँ हटाइस् pour bénir les autres. अरू मान्छेलाई त्यो कुरालाई आशिष गर Que je sois le centre कि म चाहिँ et que moi étant le centre, je bénirai les autres. बीचमा रहौँ र म चाहिँ अरूलाई आशिष गर्छु Alléluia. हालेलुया Et c'est ce qui s'est passé. त्यही चाहिँ भयो Il a manifesté ce commandement. उहाँले यो आज्ञा भन्नुभयो On voit ici le premier commandement. हामी देख्छौँ पहिलो आज्ञा Parce que s'il aimait l'éternel plus que tout, यदि उसले परमेश्वरलाई सबै कुरा भन्दा toute पहिला sa माया force. गरेको भए आफ्नो सारा बलले il allait abandonner ses richesses. उसले आफ्नो धन सम्पत्ति S'il पहिला aimait l'éternel de toute son âme, यदि आफ्नो सारा प्राणले परमेश्वरलाई माया गरेको भए il n'aurait pas eu de problème de partager. उसले अरूलाई बाँडचुँड गर्नमा कुनै समस्या नै हुँदैन Mais le थियो Seigneur lui a dit, तर परमेश्वरले भन्नुभयो tu vends tout. तँ सबै बेच Amen. आमेन Tu donnes aux pauvres. गरिबहरूलाई दे Après avoir donné aux pauvres, त्यो गरिबहरूलाई दिइसके पछाडि maintenant charge ta croix. आफ्नो क्रुसलाई बोक Amen. आमेन Il a dit charge. उहाँले भन्नुभयो त्यो आफ्नो क्रुसलाई बोक Ça veut dire que c'est quelque chose de lourd. भन्नु खोजेको त्यो कुरा गरौँ छ Ce n'est pas quelque chose de léger. हलुको छैन La croix pesait. क्रुस गरौँ थियो La croix, c'était le fardeau le plus lourd. त्यो क्रुस सबैभन्दा गरौँ बोझ थियो C'était l'arme fatale pour tuer un homme. त्यो चाहिँ एउटा मान्छेलाई मार्न सक्ने खालको कुरा थियो Tuer un homme avec une arme, c'était trop facile. एउटा मान्छेलाई एउटा हतियारले मार्न सजिलो थियो Mais mourir avec la croix, तर त्यो क्रुसमा टाँगेर मर्नु c'était l'arme ultime. त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो Même l'électrocution n'est pas forte. त्यतिखेर त्यहाँ इलेक्ट्रिक लगाएर मार्ने पनि गाह्रो La थिएन croix, tu suffoques. अनि त्यो क्रुस चाहिँ बोक्नुपर्छ Les pointes dans tes mains. अनि हातमा ठेला उठ्छ Et tu dois supporter tout ton corps. र पहिला आफ्नो शरीरलाई पनि थाम्नु पर्छ Tu as du mal à respirer. तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो पर्छ L'électrocution, on appuie le bouton, tu grilles. त्यो इलेक्ट्रिकबाट मार्ने त एउटा बटन थिच्दा तपाईँ मर्नुहुन्छ Mais la croix, तर क्रुस c'est quelque chose qui pèse. चाहिँ केही कुरा गरौँ C'est quelque chose qui coûte ton sang. तपाईको रगत चाहिन्छ C'est quelque chose qui va te coûter. तपाईलाई केही मूल्य पर्छ Alléluia. हालेलुया Suis-moi मलाई पछ्या en te chargeant de la croix.
क्रुसलाई बोकेर Alléluia. हालेलुया Il nous manque la croix. हामीलाई क्रुस चाहिन्छ Si nous voulons voir हाम्रो जीवनमा क्रुस पुगेको छैन la postérité यदि nombreuse. हामी हाम्रो परिवार ठुलो भएको देख्न चाहन्छौँ Verset 22. यहाँ 22 मा Mais affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. यहाँ लेखेको छ तब त्यो कुराले त्यसको अनुहार अँध्यारो भयो र दुखित भएर गइहाल्यो किनभने त्यससित धेरै धन सम्पत्ति थियो अनि वरिपरि हेरेर येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्न कति कठिन छ Alléluia. Qu'il est difficile. कठिन छ Qu'il est difficile. कठिन छ Des gens qui ont des richesses जतिजनाकोमा धन छ pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. स्वर्गको राज्यमा पस्नलाई La richesse, धन ce n'est pas l'or et l'argent. धन भनेको सुन र चाँदी र पैसा होइन Amen. आमेन Comprenez-moi bien. मलाई राम्ररी बुझ्नुहोस् La richesse, ce n'est pas l'or et l'argent. धन सम्पत्ति भनेको पैसा होइन L'apôtre Paul dit, tu peux offrir même ton corps en sacrifice. आफ्नो पावलले भन्छन् आफ्नो शरीरलाई पनि तिमी बलि दिन सक्छौ Mais si tu peux donner ton argent à tous les pauvres. आफ्नो पैसा सबै गरिबलाई दिन सक्छौ Mais si tu n'as pas l'amour, तर यदि तपाईकोमा प्रेम छैन cela ne vaut rien. त्यो केही कामको लाग्दैन तपाईले गरेको La कुरा richesse de l'homme, मान्छेको धन c'est son amour. त्यो चाहिँ आफ्नो प्रेम हो Alléluia. हालेलुया Notre richesse, हाम्रो धन c'est notre amour de nous-mêmes. चाहिँ हाम्रो लागि प्रेम हो C'est pour cela que le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. यसै कारण उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्नो छिमेकी आफ्नो छेउको मान्छेलाई आफै झै प्रेम गर्नु La parole de Dieu dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. बाइबलले भन्छ लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ La plus grande preuve d'amour, प्रेमको सबैभन्दा ठुलो c'est de देखाउने donner तरिका sa vie pour ceux qu'on aime. आफ्नो जीवन आफूले माया गरेको मान्छेको लागि अर्पण गर्नु हो C'est ton amour pour l'argent qui te pousse à aller travailler. तपाईको पैसाको प्रेमले तपाईलाई काम गर्न लान्छ C'est ton amour pour être riche qui te pousse à faire des actions. तपाईको धनी हुने मनले गरेर चाहिँ तपाईलाई काम गर्न C'est pas लान्छ l'argent que tu reçois qui te rend riche. पैसा जुन पाउनुहुन्छ त्यसले तपाईलाई धनी Mais c'est बनाउँछ l'amour que tu as pour l'argent जुन पैसाको लागि तपाईकोमा प्रेम छ qui te pousse à y aller. त्यसले चाहिँ तपाईलाई ढक्कल्छ Amen. जानका लागि Dieu n'a pas dit que l'argent est la cause de tous les maux. परमेश्वरले भन्नु भएन सबै प्रेमको समस्या चाहिँ पैसा हो Mais Dieu a dit quoi? तर परमेश्वरले के C'est भन्नु l'amour de l'argent. परमेश्वरले भन्नुभयो पैसाको प्रेम Tu peux remplacer argent par tout ce qui est que tu aimes. तपाई आफूले मन परेको जे पनि कुरा छ त्यसलाई Il y a certaines पैसा personnes भन्न qui aiment la सक्नुहुन्छ। musique. कतिजनालाई म्युजिक मन पर्छ C'est l'amour de la musique त्यो चाहिँ म्युजिकको मायाले qui va leur coûter tout. ले गर्दा चाहिँ सबै कुरा चाहिन्छ Alléluia. हालेलुया C'est l'amour d'eux. त्यो चाहिँ प्रेम Et mais si ce jeune homme तर यो avait l'amour de Dieu, जवान मानिसमा परमेश्वरको प्रेम भएको भए l'amour de Dieu परमेश्वरको प्रेम allait le pousser à tout abandonner pour ce Dieu. ले चाहिँ सबै छोड्न लगाउँथ्यो त्यो परमेश्वरको लागि Alléluia. हालेलुया Laissez-moi vous dire, il y a un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. मलाई भन्न दिनुहोस् एउटा मान्छेले एउटा बाकास भेटो Quand il a trouvé le एउटा जमिन भित्र जब उसले त्यो देखे Le trésor ici représente l'or, n'est-ce pas? यहाँनिर भनेको चाहिँ सुन हो Qu'est-ce que cet homme a fait pour acquérir le trésor? त्यो मान्छेले त्यो जमिनको त्यो सुनलाई पाउनलाई के La गर्यो parole de Dieu dit il est allé vendre tout ce qu'il avait en possession pour posséder ce trésor. बाइबलको वचनले भन्छ त्यो मान्छेले घरमा गएर सबै बेच्यो त्यो जमिन किन्नलाई Bon, maintenant, mais le trésor ici, c'est Jésus. तर आजको धन सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो येशू हुनुहुन्छ Il est allé tout vendre उहाँ सबै गरेर बेच्नु pour l'amour de Jésus. परमेश्वरको प्रेमको लागि Alléluia. हालेलुया Et c'est ça अनि
अनि त्यही हो que le Seigneur veut nous कि montrer. परमेश्वरले आज हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ Il était affligé. उहाँ दुखित हुनुहुन्छ Ça veut dire que tout son monde s'est effondré. भन्नु खोजेको सबै उहाँको शब्दहरू पग्लिएर जान्छ Quand mes frères, je vais la raconter, il va nous tuer. Amen. Mon frère Valérie. Alléluia. Son histoire va aller loin. उसको कथा लामो छ Et il veut se marier. ऊ बे गर्न Et là, चाहन्छ il voit aussi la fin des temps approche. र उसले भन्छन् अन्तिम समय नजिक आइसक्यो Et c'était quoi qu'on lui a dit? Si le Seigneur revient, il va être content avec le Si le Seigneur revient, il va être content, यदि परमेश्वर mais avec des regrets. ऊ खुसी हुन्छ तर रिग्रेट पनि गर्छ Pourquoi il a des regrets? किन चाहिँ ऊ दुखित पनि हुन्छ Mais parce que Dieu vient किनभने परमेश्वर et आउनुभयो il n'aura pas encore accompli les désirs de son cœur. तर उसले आफ्नो हृदयको इच्छा चाहिँ पुरा गरेन Se marier. त्यो बे गर्नु Amen. आमेन Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu. मलाई भन्न दिनुहोस् Moi, je veux que le Seigneur revienne म चाहन्छु कि परमेश्वर et je n'ai आएको aucun regret. र म कुनै कुराको रिग्रेट Si tu as गर्छु encore un regret, दुखित हुँदिन यदि तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ sache que tu es encore जान्नुहोस् कि तपाईँ en train d'adorer quelque chose d'autre. तपाईँ केही कुराको महिमा Sache qu'il y a गर्नुहुन्छ encore une richesse à l'intérieur जान्नुहोस् de कि toi. तपाईँ भित्र एउटा धन छ Et il sera difficile र त्यो गाह्रो हुन्छ pour toi तपाईँको लागि d'entrer dans le royaume स्वर्गको राज्यमा बस्न si tu n'abandonnes pas cette richesse. यदि तपाईँले त्यो धनलाई छोड्नुहुन्न भने Amen. आमेन Il y a pour d'autres, c'est l'école. कतिजनाको लागि स्कुल हो Pour d'autres, c'est le travail. कतिजनाको लागि काम हो Pour d'autres, c'est le sport. कतिजनाको लागि खेलकुद हो Mais ce sont des dieux. त्यो तिनीहरू चाहिँ मूर्ति जस्तो Le हुन् Seigneur dit, tu ne peux pas aimer परमेश्वर भन्नुहुन्छ maman एउटा पैसा et Dieu en même temps. पैसा धन Tu सम्पत्ति aimeras l'un परमेश्वरलाई et tu माया vas गर्न सक्दैनौ। détester ou haïr l'autre. एउटालाई माया Mépriser गर्छौ, l'autre. अर्कोलाई माया गर्दैनौ Dieu nous a donné un cœur. परमेश्वरले एउटा हृदय दिनुभएको छ On n'en a pas deux. हाम्रोमा दुईटा छैन Amen. आमेन Et l'autre cœur एउटा est हृदय fait pour aimer माया गर्नको लागि बनेको हो une seule personne. एउटै मान्छे Si tu aimes deux, यदि दुईटालाई माया ton गर्छौ cœur est partagé. तपाईको हृदय बाँडिएको छ Alléluia. हालेलुया Et ses disciples furent étonnés de ce discours. अनि यी कुरा सुनेर ती चेलाहरू छक्कै परे Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, उहाँले भन्नुभयो छोराछोरी qu'il est difficile गाह्रो छ à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. यहाँ भन्नुभयो बालकको धन सम्पत्ति माथि भरोसा राख्नेलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न कति कठिन हुन्छ आमेन। Difficile. कठिन La parole de Dieu dit, mets en l'éternel ta confiance. परमेश्वर बाइबलले भन्छ परमेश्वरमा आफ्नो भरोसा राख Et il र उहाँले te donnera ce que ton cœur désire. तिम्रो हृदयले जे चाहन्छ त्यो दिनुहुन्छ Alléluia. हालेलुया Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् si tu mets Dieu la priorité dans ta vie, यदि हाम्रो प्रायोरिटी हाम्रो पहिलो कुरा परमेश्वरलाई राख्छ भने le royaume. उहाँले स्वर्गको राज्य दिनुहुन्छ Si le royaume de Dieu यदि स्वर्गको राज्य est ta priorité, तपाईको प्रायोरिटी हो Jésus va te le donner. येशूले तपाईलाई दिनुहुन्छ Cet homme riche त्यो धनी मान्छे est venu आयो pour chercher le royaume. स्वर्गको राज्यलाई पाउन Mais il est retourné triste. तर ऊ दुखित भएर गए Pourquoi? किन Parce que le royaume de Dieu était किनभने devant lui. स्वर्गको राज्य Mais il ne s'est pas saisi du royaume. पाउन आए तर उसले पाएन Jésus n'était pas son trésor. येशू उहाँको Amen. धन सम्पत्ति Il थिएन n'était pas prêt à tout donner pour Jésus. ऊ सबै Et कुरा pourtant, le छोड्न Seigneur तयार lui a dit, थिएन। suis-moi. मलाई पछ्याउनलाई भन्नुभयो Quand Jésus lui a dit, suis-moi, il était juste en train de dire, je suis le chemin, अनि je suis la vérité et je suis la vie. अनि जब परमेश्वरले भन्यो मलाई Tout पछ्या ce que tu cherches. त्यसै बाटो सत्य र जीवन मै हुँ मलाई पछ्या C'est en moi. जे पनि तँ खोज्छस् Le ममा jeune छ। homme n'a pas abandonné à cause de la croix. त्यो जवान मान्छेले क्रुसको लागि छोडेनन् Il a abandonné parce que sa croix était plus grosse que la croix du Seigneur. उसले छोडेनन् किनभने उसको क्रुस ठुलो थियो परमेश्वरको भन्दा Le jeune homme avait encore de la vigueur. जवान मान्छेको अझै पनि Il ताकत n'était थियो pas encore fatigué d'être गलेको fatigué. थिएन गलेर Alléluia. हालेलुया Il voulait le ciel उसले स्वर्ग जान चाहन्छ et en même temps, अनि एउटै समय il voulait le monde.
Il voulait le ciel et le monde. उसले चाहिँ स्वर्ग पनि जान चाहन्छन् र संसार पनि चाहन्छन् एउटै समयमा Mais qu'est-ce qui s'est passé? तर के भयो Ça n'a pas marché. त्यसले काम गरेन Il a aimé le monde उसले संसारलाई माया गरे plus que Jésus. येशू भन्दा पनि C'est pour cela il était triste, यसै कारण ऊ दुखी भए très triste. यति साह्रो दुखी भए Affligé. उसको हृदय टुट्यो On l'a même pas touché. हामीले छोएनौँ पनि C'est comme les petits enfants. यो बच्चाहरू Tu lui जस्तै dis non, ne touche pas. हामी भन्छौँ ए Il commence à pleurer de tout son corps, de toutes ses larmes. रुन थाल्छ सबै आँसु बगाएर Parce que son désir était de toucher. किनभने उसको इच्छा थियो त्यो छुने Amen. Amen. Ah, c'est mon fils. यो चाहिँ मेरो छोरा Tu हो lui dis ne touche pas, c'est म chaud. भन्छु यो नछु तातो छ Il ऊ pleure. रुन थाल्छ "आ" गरेर। On t'a même encore rien fait. मैले त छुको पनि Alléluia. Le Seigneur dit il est plus aisé भनेको छ qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. यहाँ भनेको छ धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु त बरु सियोको नाथीबाट ऊँटलाई छिर्न सजिलो हुन्छ Un chameau. एउटा ऊँट Ça ne fait pas de sens. केही कुरै भएन एउटा सियोको दुलोबाट Le chameau एउटा ऊँट peut passer par le trou d'une aiguille एउटा सियोको दुलोबाट पस्नु que कि un homme riche एउटा धनी मान्छेलाई entre dans le royaume des cieux. स्वर्गको राज्यमा जान गाह्रो हुन्छ Qu'est-ce que Jésus était en train de nous montrer comme येशूले image? के देखाउँदै हुनुहुन्छ Le royaume, स्वर्गको राज्य l'aiguille, le chameau त्यो ऊँट et un homme. र मान्छे Il y a une grosse différence. धेरै भिन्दा छ Alléluia. आमेन Mais vous savez que le royaume de Dieu ressemble à une aiguille aux yeux de Dieu. तपाईहरुलाई थाहा छ स्वर्गको राज्य भनेको एउटा सियोको दुलो जस्तो हो परमेश्वरको आँखामा Amen. आमेन Le Seigneur dit quoi? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ Large ठुलो est le chemin छ qui बाटो mène à la perdition, जसले चाहिँ नर्कमा लान्छ mais petit et resserré, étroit तर सानो र साँगुरो बाटो छ est le chemin त्यो बाटो qui mène vers la vie. जसले चाहिँ जीवनमा लान्छ Mais स्वर्ग entre les deux, भन्नुको चाहिँ यो दुईटामा beaucoup choisissent मान्छेहरू le chemin de la perdition, त्यो नर्क जाने फराकिलो बाटो mais लिन्छ peu तर कम्ती choisissent celui-ci. मान्छेहरूले चाहिँ त्यो स्वर्ग जाने बाटो चुन्छन् Mais pourquoi? किन Qu'est-ce que le chameau a de différent avec l'homme? के चाहिँ भिन्दा छ एउटा ऊँट र मान्छेमा Le chameau ऊँट est sous la direction d'un homme. एउटा ऊँटले आफ्नो गोठालोलाई पछ्याउँछ Mais l'homme तर मान्छे est celui qui choisit. ले चुन्छ के गर्ने म भनेर Bon, अब le chameau, एउटा ऊँट si tu veux le faire passer dans le trou d'une aiguille, यदि तपाईँ एउटा ऊँटलाई सियोको दुलोबाट छिराउनु मन tu छ vas le faire passer. कसरी छिराउने Tu dis chameau, rentre dans le trou de l'aiguille. तपाईँ भन्नु ए ऊँट तँ यो Je ne peux pas. सियोको दुलोबाट छिर्स त्यो ऊँटले Tu vas भन्नु rentrer सक्छ। aujourd'hui. आज त पसेर छोड्छ Le seul moyen pour que le chameau rentre dans le trou de l'aiguille, एउटै तरिकाले मात्रै ऊँट त्यो दुलोबाट छिर्नु il faut qu'il devienne poussière. ऊ चाहिँ धुलो हुनुपर्छ Amen. आमेन Il faut qu'il soit consumé ऊ चाहिँ जल्नुपर्छ complètement. पूर्ण रूपले En d'autres termes, pour que le chameau puisse entrer dans dans le trou de l'aiguille, भन्नु खोजेको एउटा ऊँटलाई त्यो सियोको दुलोबाट पसाउनलाई il faut qu'il meure. ऊ मर्नुपर्छ Mais l'homme, तर मान्छे pour qu'il entre dans le trou de l'aiguille, त्यो सियोको दुलोमा पस्नलाई c'est la même chose que le chameau. एउटै कुरा हो ऊँट जस्तै ऊ मर्नुपर्छ Et c'est ce que le Seigneur dit. अनि परमेश्वर त्यही भन्नुहुन्छ Celui जो qui veut être mon disciple, मेरो चेला हुन चाहन्छन् s'il aime यदि ऊ माया गर्छ sa vie आफ्नो जीवन plus que moi-même, म भन्दा पनि बढी आफ्नो जीवनलाई माया गर्छ il n'est pas digne d'être mon disciple. त्यो मेरो चेला हुने योग्यकै छैन Mais celui qui va perdre sa vie तर जसले चाहिँ आफ्नो जीवन गुमाउँछ à cause de moi, मेरो कारणले
je vais la lui redonner. म त्यसलाई त्यसको जीवन दिन्छु। Alléluia. हालेलुया। Si vous voulez passer par le trou du négué, यदि तपाईँ si vous voulez rentrer dans le royaume de ce qui est étroit, स्वर्गको राज्यमा जान चाहनुहुन्छ जुन चाहिँ सानो छ, vous devez vous renier vous-même. तपाईले आफैलाई इन्कार गर्नुपर्छ। Vous devez abandonner toute volonté de choisir quelque chose. जे पनि चुन्ने इच्छा आशा हुन्छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ। Vous devez être capable de vivre léger. हलुका रूपले जिउनुपर्छ। Si Dieu me dit c'est ici que tu meurs, c'est là que je meurs. यदि परमेश्वर भन्नुहुन्छ तँ यहाँ मर्नु, हामी त्यही मर्नुपर्छ Et laissez-moi vous dire, भन्नु खोजेको। pour que Jésus porte cette croix de l'humanité, येशूले त्यो मानिस रूपको क्रुसलाई बोक्नलाई il a dû aller à Golgotha, उहाँ गलगत्तामा जानुभयो। à Gethsemane, dans ce jardin. गेत्सेमानी त्यो बगैँचामा पहिले जानुभयो। Il allait prier. उहाँले आफ्नो मूल्य Et il allait prier pour quelle raison? प्रार्थना गर्न जानुभयो। किन? Pour faire mourir sa volonté. आफ्नो इच्छालाई मार्नका लागि त्यो बगैँचामा जानुभयो। Il devait passer par le trou du négué. उहाँ चाहिँ त्यो एउटा सियोको तुलोबाट पस्नु पर्थ्यो। Il a dit, Seigneur, je sais que je dois boire cette coupe. उहाँले भन्नुभयो मलाई थाहा छ प्रभु यो कचौराबाट मैले पिउनु Mais पर्छ, s'il te plaît, तर हुन सक्छ भने je n'ai pas envie de la boire. मलाई पिउनु मन छैन, Mais néanmoins, तै पनि pas ma volonté, मेरो इच्छा होइन mais que ta कि volonté soit. तपाईँको इच्छा चाहिँ पुरा हो। Et il n'a pas prié une fois. अनि Il n'a pas prié une seule fois. उहाँले एकचोटि मात्रै प्रार्थना गर्नु Il a भयो। prié plus de 3 fois. उहाँले 3 चोटि भन्दा नि बढी प्रार्थना Et ça lui a गर्नुभयो। pris plus de 1 heure de अनि prière. 1 घण्टा भन्दा नि बढी प्रार्थना चाहियो। Rien que pour demander que sa volonté soit écrasée. आफ्नो इच्छा कुल्चियोस्, आफ्नो इच्छा चाहिँ हटोस् भनेर 3 चोटि भन्दा नि बढी प्रार्थना La गर्नुभयो। mort véritable de Jésus, येशूको मृत्यु, c'était quand le sang, son cœur a été brisé. उहाँको शरीर जब टुट्यो, Les scientifiques disent que Jésus n'est pas mort parce qu'on a percé son côté. साइन्टिस्टहरूले भन्छन् कि येशू मर्नु भएन किनभने हामीले उहाँको करणको मुनि La दुलो पार्यौं। chose, Jésus est mort parce que son cœur, l'eau et le sang étaient déjà mélangés. अनि उहाँको हृदयभित्र पानी र Pour que le रगत sang puisse sortir de tes मिलेको pores, थियो। आफ्नो रगत आफ्नो il faut que शरीरबाट le पानी cœur निस्किनलाई puisse exploser. उहाँको मुटुभित्र Les मुटु vaisseaux फुट्नुपर्छ। sanguins commencent à... सबै मुटुहरू फुट्नुपर्छ भित्र Et là, पानी tu निस्किनलाई transpires. र पुरा पसिना आउँछ। Et là, le sang. अनि शरीरबाट खुनहरू बग्न थाल्छ। Il y a eu une explosion dans son cœur. उहाँको हृदय फुट्यो भित्र। Son désir d'aimer Dieu et de faire la volonté de Dieu était plus grand que son propre cœur. उहाँको इच्छा परमेश्वरलाई माया गर्नेलाई उहाँको पालन गर्ने आफ्नो इच्छाभन्दा ठुलो थियो। यसै कारण आफ्नो हृदय टुट्यो पुफ गरेर। Par amour, त्यो प्रेमले il a montré qu'il était capable d'aimer Dieu. देखाउनु भयो कि उहाँले परमेश्वरलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ। Abraham अब्राहम avait cette même impression. एउटै तरिका थियो। Son fils lui demande où est le sacrifice. उसको छोराले सोध्यो बलि चाहिँ कहाँ छ? On a le feu, हाम्रोमा आगो छ, on a le couteau हाम्रोमा खुकुरी छ et on a le bois. र हाम्रोमा दाउरा छ। L'autel est prêt. वेदी बनिसक्यो, Mais où est l'agneau? चिता तयार छ तर यसमा जलाउने खोइ। Dieu se pourvoira lui-même. परमेश्वरले भने परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। Quand tu donnes tout, जब तपाईँ सबै दिनुहुन्छ Dieu te redonne. परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो सबै कुरा दिनुहुन्छ। Pendant qu'Abraham prend ce couteau, अब्राहमले त्यो खुकुरी लिँदा il veut couper cet enfant. आफ्नो छोरालाई काट्न आँटे। L'ange lui dit ne descends pas. स्वर्गदूतले भने आफ्ना हात नउठा। Il était prêt à immoler l'enfant. उनले त्यो बच्चालाई मार्न तयार थियो। Et c'était une mort. अनि त्यो मृत्यु हो। Il devait être égorgé. अनि मार्नका लागि घाँटी काट्नु पर्थ्यो। C'était le désir de son cœur. त्यो चाहिँ आफ्नो हृदयको C'était इच्छा। ce qu'il aimait plus. उनले सबैभन्दा बढी केलाई माया Mais गर्थे। Abraham était prêt à rentrer dans le trou de l'aiguille. अनि अब्राहम चाहिँ त्यो सियोको दुलोबाट पस्न Et il a लागेको dit si c'est थिए। ce que ça prend अनि भन्नुहुन्छ यही कुरा चाहिन्छ pour que je puisse कि म être agréable à Dieu, परमेश्वरको लागि असल हुनमा je vais म offrir un sacrifice. बलि चढाउँछु। Mon fils que j'aime. मेरो छोरा जसलाई Hébreu dit, धेरै माया गर्छु। यसै कारण बाइबलले भन्छ Abraham avait une telle foi अब्राहमको यस्तो विश्वास थियो
qu'il s'imaginait que le Seigneur allait ressusciter d'une manière quelconque ce fils de la promesse. कि मारे पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको छोरालाई बिउजाउनुहुन्छ Il भनेर croyait en la résurrection उनले पूर्ण रूथनमा विश्वास गर्थे à cause du sacrifice. त्यो बलिको कारण Si tu n'es pas capable d'offrir ton corps en यदि sacrifice, आफ्नो शरीर बलिको रूपमा दिन सक्नुहुन्न tu ne crois pas encore à la résurrection. तपाईँ पूर्ण रूथनमा विश्वास गर्नुहुन्न Si tu n'es pas capable de mourir pour Jésus, यदि तपाईँ येशूको लागि मर्न सक्नुहुन्न tu n'as pas encore la foi. तपाईले C'est par la जान्नुभएको foi छैन विश्वासद्वारा Que Abraham कि अब्राहम avait offert son fils. en ले sacrifice. चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई बलिमा दिए Alléluia. Il हालेलुया avait la foi. उसकोमा विश्वास Il थियो dit, si Dieu a dit, हो परमेश्वरले भन्नुभयो il va me redonner mon fils. परमेश्वरले माग्नुभयो भने मलाई दिनुपर्ने हुन्छ Si Dieu a dit यदि परमेश्वरले भन्नुभयो qu'il te prépare une maison dans कि le उहाँले ciel, आफ्नो घर बनाउनुहुन्छ स्वर्गमा ta maison doit être capable d'être vendue à tout moment. तपाईको घर जहिले पनि बेच्न तपाईँ तयार हुनुपर्छ Pour hériter une maison dans le ciel. स्वर्गमा अर्को घर En lui disant, vends tout. भन्नुहुन्छ कि सबै कुरा बेच Tu auras un trésor dans le ciel. तो स्वर्गमा धन सम्पत्ति पाउनेछ Si c'est l'or que tu cherches, यदि सुन खोजेको हो भने au ciel il y en a et tu marches dessus. स्वर्गमा सुनमा हिँड्न पाइन्छ Alléluia. हालेलुया Peuple de Dieu, स्वर्गीय परमेश्वर जाति notre cœur. हाम्रो शरीर C'est हाम्रो ce que हृदय Dieu veut. चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ Dieu ne veut pas de ton argent. परमेश्वरले तपाईँको पैसा चाहनुहुन्न Il ne veut pas de tes richesses. तपाईँको धन सम्पत्ति चाहनुहुन्न Là où se trouve ton cœur, जहाँ तपाईँको हृदय छ là aussi est ton trésor. त्यहाँ तपाईँको जहाँ तपाईँको धन छ त्यहाँ तपाईँको मन छ Si ton cœur est dans la drogue, यदि तपाईँको हृदय ड्रग्समा छ ton argent va aller où? तपाईँको पैसा कहाँ जान्छ Dans la drogue. ड्रग्समै जान्छ Tu vas travailler तपाईँ काम गर्नुहुन्छ pour l'amour de la drogue. ड्रग्स पाउनलाई Alléluia. हालेलुया Ceux qui font le son au BS, l'aide sociale, जतिजना यहाँको सोसल हेल्थमा quand le chèque arrive, जब चेक आउँछ le chèque est déjà fini. चेक सकिन्छ Le chèque est fini même avant qu'il n'arrive. त्यो आउनुभन्दा नि अगाडि Parce सकिसक्छ qu'ils ont déjà pris des dettes partout. किनभने चारैतिर बाँकी Dès qu'ils ont लिन्छ le chèque, ils redonnent à ceux à qui. जब चेक आउँछ उनीहरूले बाँकी खाएको मान्छेलाई दिन्छन् Parce que leur cœur किनभने उनीहरूको हृदय est attaché. त्यो उनीहरूको हृदय जोडेको छ Où se trouve जहाँ चाहिँ ton cœur उनीहरूको हृदय छ aujourd'hui? तपाईँको हृदय कहाँ Où छ se trouve ton trésor? तपाईँको सम्पत्ति कहाँ छ Est-ce que tu es prêt à faire exploser ce cœur के तपाईँ त्यो हृदय तोड्न तयार हुनुहुन्छ pour l'amour de Jésus? येशूको प्रेमको लागि C'est pour cela l'apôtre Paul dit, यसै कारण पावलले भन्छ rien केही पनि ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, केही कुराले पनि हामीलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि नि लामो। हटाउन सक्दैन ni les persécutions. न त खेदोले Alléluia. हालेलुया Aucune de ces choses केही कुराले पनि ne peut nous séparer हामीलाई छुटाउँदैन de l'amour qu'on a pour Dieu. जुन प्रेम छ परमेश्वरको लागि Et il dit, en toutes ces choses, भन्नुहुन्छ सबै कुरामा nous sommes plus हामी que vainqueurs. विजय भन्दा Par ठुलो qui? छौँ। Par Jésus-Christ. कोबाट येशू ख्रिस्टबाट Alléluia. Alléluia. Tu seras plus que vainqueur हामी Parce que tu as विजयमा mis ton ठुलो trésor छौँ, किनभने au हामीले bon endroit. हाम्रो धन सम्पत्ति ठिक ठाउँमा राख्यौँ Alléluia. हालेलुया Michel ne pouvait pas chauffer la fournaise plus fort que c'était chaud. त्यो भन्दा नि बढी कति आगो बाल्न सकिँदैन Alléluia. Alléluia. Il a dit, peu importe. यसो के Peu होस् importe la perfection de votre chaleur. जति सके तातो होस् La perfection de notre amour pour Jésus est plus forte que votre fournaise. हाम्रो उनीहरूले भने जतिसुकै आगो तातो होस् हाम्रो Et प्रेम la parole de Dieu परमेश्वरलाई est claire. On a dit même les caleçons. Ils étaient ligotés nus. उनीहरू नाङ्गै थिए Mais le Seigneur était en train de préciser que même le caleçon, il va conserver. परमेश्वरले उनीहरूको केही कुरा पनि जलेन Alléluia. हालेलुया On les a ligotés. उनीहरूलाई त्यत्रो बाँध्यो C'était un homme robuste. तिनीहरू बलियो थिए L'homme le plus fort. डह्रो थिए Il les a ligotés. उनीहरूलाई बाँधे Il les prend, il les jette dans le feu. उनीहरूलाई लिएर उनीहरूलाई आगोमा फ्याले En jetant dans le feu, lui-même il brûle. आगोमा फ्याल्न जाँदा ऊ आफै पनि Vous जल्यो imaginez? सोच्नुहोस् L'apôtre Paul
disponible en toutes ces choses. अनि पावलले भन्छ Nous सबै sommes कुरामा plus que vainqueurs. हामी Il विजय me बनाउन ligote de ठुलो celui छौँ। qui meurt. ऊ Et moi, je ne मर्छन् meurs मार्न pas. जान्छन् र म चाहिँ Wow. मर्दिनँ। वाउ Et laissez-moi vous dire, मलाई भन्न ils दिनुहोस् se font ligoter, उनीहरूलाई mais quand गाली- ils tombent au milieu de la fournaise जब du त्यो feu, आगोको बिचमा celui परे qui les a jetés dans le feu, जो चाहिँ आगो il est mort sans toucher le feu. उसले आगोलाई पनि नछुइकन मरे Il n'y a que Dieu seul qui est capable de faire ça. परमेश्वरले मात्र त्यो गर्न Tu सक्छ penses que tu vas perdre ta vie, तपाईलाई लाग्छ आफ्नो जीवन गुमाउनु mais tu es en train de la gagner pour l'éternité. तपाईँ अनन्तको लागि Tu जित्नु penses que tu es opprimé, तपाईलाई लाग्छ तपाईँ दुखित mais tu es en हुनुहुन्छ train d'être तर vainqueur. तपाईँ विजेता बनिँदै L'on pense que le monde aujourd'hui contrôle tout. तपाईलाई लाग्छ कि संसारको Mais मान्छेले Dieu सबै est en कन्ट्रोल train de गर्छ। gagner. तर परमेश्वर जित्दै हुनुहुन्छ Jésus était en train de mourir à la croix. येशू मर्दै हुनुहुन्छ क्रुसमा En ce moment, le diable était en train d'être écrasé. त्यो क्रुसमा त्यतिखेर शैतानलाई किल्चिँदै हुनुहुन्थ्यो Et quand le diable dit je suis en train de tuer Jésus, जब शैतानले भने म येशूलाई Jésus est en train de dire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il est en train de les clouer à la croix. उहाँले हाम्रो La chose que le diable a utilisée comme l'arme ultime, जुन शैतानले c'était l'arme ultime de sa propre त्यसलाई mort. मार्नका लागि ऊ आफै मर्दै थिए Alléluia. हालेलुया Le Seigneur dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué au bois. परमेश्वरले भन्नुभयो कि त्यो क्रुसमा टाँगे हामीलाई दोष लगाउने कुराहरू Qui voulait tuer Aman Mardoché. कसले मार्दोसेलाई मार्न चाहन्थे C'est Aman. आमानले Aman avait fait le bûcher bien propre, il va brûler. उसले चाहिँ राम्ररी त्यो चिता बनाए यसलाई आज Il जलाएर avait मार्छु c'était quoi? Il voulait pendre. Amen. उसले झुन्डाएर मार्छु भन्ने सोचे Il a mis la corde. उसले C'est दोरी celui qui लगाए rêvait même. दोरी Il बनाए disait mettez 12 nœuds au lieu de 2 nœuds. अनि उसले 12 वटा डल्लो बनाए Si एउटा la corde était comme ça, la corde était devenue comme ça. यत्रो डह्रो Parce que je थियो veux voir cet homme mourir. म चाहिँ Il मरेको ne s'est pas prosterné devant moi. त्यो मेरो अगाडि घुँडा टेकेन Il va mourir. त्यो मर्छ La parole de Dieu dit qu'il avait toutes les richesses. Il était riche, il était couronné par le roi. सबै कुरा राजा Mais il n'était pas satisfait. तरै पनि ऊ खुसी Parce qu'il y थिएन a un homme किनभने एउटा मान्छे qui n'a pas donné son âme pour lui. आफ्नो प्राण दिएन Et il a fait le bûcher उसले त्यो राम्रो ठाउँ बनाए मर्ने fort, solide. उसले दोरी ल्याए बाँधे C'est lui-même झुन्डाएर qui a fini बाँध्न dessus. तर अन्तिममा ऊ आफै मरे C'est lui-même qui a fini dessus. ऊ आफै अन्तिममा मरे Mais त्यसमा parce que तर Mardoché ne s'est pas prosterné मार्दोसे घोप्टो नपरेको कारण à cet homme. त्यो मान्छेलाई दण्डवत नगरेको कारण Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् Dieu lui a tout redonné. परमेश्वरले त्यसलाई सबै कुरा दिनुभयो Alléluia. हालेलुया Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, मलाई भन्न दिनुहोस् nous devons être capables हामीले सक्नुपर्छ de nous prosterner vers le seul et unique Dieu. एउटै मात्रै परमेश्वरको Pas en अगाडि action, बोलिया मात्र Mais même en होइन pensée. तर सोचाइमा पनि Alléluia. हालेलुया Pas seulement les choses qu'on a l'habitude de faire, mais même dans notre गर्ने subconscient. बोल्ने कुरामा मात्र होइन Nous devons तर être capables de dire, Seigneur, वचनमा même dans mon भएर, rêve, je dois mourir, je meurs. परमेश्वर यदि म सुतेको Parce que बेला les gens, quand on veut les tuer dans les rêves, ils se réveillent vite. अनि Wow! जब मान्छे J'ai failli mourir. सपनामा मरेको देख्न आँट्यो भने नि बिउजिन्छ म झट्टै मरिन Il faut que même dans ton rêve, tu acceptes la mort. तपाईले आफ्नो सपनामा पनि Et que tu te देख्नु tiennes ठिकै pour छ। Dieu. र परमेश्वरको लागि अडिनु पर्छ Revenons sur les juifs captifs. अनि यहाँ त यहुदीहरू बाँधिएकोमा आऊ Et quand on les a jetés dans la fournaise, जब तीलाई आगोमा फेलियो devinez qui est-ce qu'ils ont rencontré là-bas? कसलाई चाहिँ भेटायो त्यो आगोमा Le désir de leur cœur. उनीहरूको हृदय इच्छा Le गरेको désir de कुरा, leur cœur, c'était de voir leur Dieu. आफ्नो इच्छा चाहिँ Ils ont dit, परमेश्वर "Oh, wow." उनीहरूले भने मेरो प्रभु Même si tu nous enlèves la vie, यदि राजा तिमीले हाम्रो tu जीवनलाई ne मारे pourras पनि pas avoir autorité sur nous. म हामीमाथि अधिकार लिन Mais nous, nous पाउँदैनौँ। donnons la vie au roi des र rois. हाम्रो जीवन चाहिँ Notre राजाको vie appartient राजालाई au Seigneur des हाम्रो Seigneurs. जीवन Peu importe que tu प्रभुलाई nous envoies dans le feu. जतिसुकै चोटि आगमा Si dans le feu on rencontre notre roi यदि हाम्रो परमेश्वरलाई Envoie-nous आगोमा dans le भेट्यो feu. भने Tant qu'à हामी faire. आगोमै जान्छौँ et on les a envoyés dans le feu, र आगोमा devinez qui était au milieu d'eux? को थिए आगोमा Le quatrième homme. सात Celui qui avait le fils, allez, le visage comme le fils d'un homme. जसको अनुहार चाहिँ Le fils de Dieu. जस्तो थियो C'était Jésus. त्यो चाहिँ येशू हुनुहुन्थ्यो Ils étaient déliés उनीहरूलाई dans la छुट्यायो fournaise. त्यो आगोमै Ils étaient déliés उनीहरूलाई dans la छुट्यायो fournaise. त्यो आगोमै Alléluia. हालेलुया Et quand ils sont déliés dans la fournaise, अनि जब उनीहरूलाई छुटाइयो le monde entier a su संसारको qu'il y avait un मान्छे Dieu.
लाई थाहा भयो कि एउटा परमेश्वर छ Lorsque tu offres tout en sacrifice, जब तपाईँ सबै दिनुहुन्छ tu manifestes la gloire de Dieu dans le monde. परमेश्वरको लागि सबै Le छोड्नु roi a dit, moi je vais écrire महिमा des choses que je n'ai देखाउनुहुन्छ point vues ni entendues. Je vais écrire à tous les royaumes sur la terre. उसले त्यो राजाले अनि भने कि सबै Celui qui parlera राज्यलाई mal du Dieu de ces जसले gars, चाहिँ यो केटाहरूको परमेश्वरको विरुद्ध बोल्छ sa maison sera tournée en immondice. त्यसको घरलाई जलाइने छ Amen. आमेन Tout ce qu'il a sera pillé et brisé जे कुरा पनि छ तिनीहरूको ढुट्टो पारिने pour छ glorifier ce Dieu. त्यो महिमा गर्नुपर्छ यो परमेश्वर Daniel à son tour. दानिएल आफ्नो On पालीमा dit, vous ne devez pas prier. उनीहरूले भने तिमीहरू Vous प्रार्थना devez गर्नुहुँदैन seulement porter les masques. तिमीहरू मास्क मात्रै लिनु हो Amen. आमेन Alléluia. आमेन Vous devez seulement porter les masques. मास्क लगाउनु पर्छ Si on vous trouve à l'église, यदि मण्डलीमा en train तिमीलाई de prier à Jésus, प्रार्थना गरेको येशूलाई vous êtes faits. तिमीहरूलाई हामी पक्रिने छौँ Ok. ओके Daniel a dit, c'est दानिएलले l'heure भने de la ठिकै छ, prière. प्रभु Je vais prier alors. म प्रार्थना गर्ने Il बानी s'est छ prosterné प्रार्थना comme sa coutume. उसले पहिला गरे जसरी C'était son प्रार्थना heure गरे, de prière. उसको प्रार्थना Peu गर्ने समय importe les थियो décrets du roi, जेसुकै son राजाले cœur était भनोस्, tourné vers उसको हृदय Jérusalem. परमेश्वरतिर Son थियो cœur était à Jésus. उसको हृदय येशूमा थियो On a dit, ah, उसले भने हा voici ce chrétien-là. यो क्रिस्चियनलाई Quand on पक्रियो dit de ne pas prier, il prie. जब प्रार्थना Le नगर्नु voici condamné maintenant. Oh, roi, on a trouvé Daniel. Daniel était en train de prier. दानिएलले प्रार्थना गर्दै थियो Aujourd'hui, c'est rare आज de voir les chrétiens amenés en prison parce qu'ils prient. क्रिस्चियनलाई जेलमा लान्छन् किनभने प्रार्थना गरे Alléluia. हालेलुया Mais Daniel était en train de prier. दानिएल प्रार्थना Si on गर्दै थिए t'amène en prison parce que tu pries dans la यदि maison de तपाईलाई Dieu, जेलमा लगियो किनभने तपाईँले प्रार्थना le गरे Seigneur dit, भनेर réjouis-toi. परमेश्वर भन्नुहुन्छ खुसी हौ Parce que tu es mort à cause de mon nom. किनभने मेरो कारण À cause de तिमीहरू moi, मर्यौ। tu meurs. मेरो Dieu कारण te तिमीहरू redonne मर्यौ। ta vie. परमेश्वरले तपाईँको जीवन दिनुहुन्छ Alléluia. Alléluia. Et là, Daniel, on l'amène. On lui dit, Daniel, pourquoi tu as fait ça? Le roi savait que Daniel avait raison. राजालाई थाहा थियो कि दानिएलको त्यो कारण छ Mais parce que किनभने Daniel était ferme. दानिएल डरो थिए Daniel lui a dit, oh roi, je n'ai rien fait. दानिएल भने मैले केही पनि नराम्रो गरेको छुइनँ Si ce sont les lions qui vont me dévorer, यो चाहिँ सिंहहरूले मलाई खान्छ qu'ils me dévorent. कसले Alléluia. हालेलुया Et là, le roi était tellement attristé et affligé. Il a jeûné ce jour-là. रिसाए उपवास बसे Le roi a jeûné. राजाले उपवास बसे Il a refusé les femmes, il a refusé la nourriture. उसले त्यो आफ्नो बुढीहरू खाने कुराहरू सबै छोडे Vous voyez l'impact तपाईँ देख्नुहुन्छ d'un homme qui donne son cœur à Dieu. त्यो एउटा मान्छे जसले आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई दिन्छ त्यसको इम्प्याक्ट Ta relation avec le Seigneur तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग fait les gens se repentir et jeûner dehors. पश्चाताप र उपवास बस्न लगाउँछ Le roi dit que moi là, उसले भने म si Daniel meurt, यदि दानिएल मर भने ce n'est pas le Daniel que j'ai connu. मैले चिनेको दानिएल होइन Et Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. अनि ऊ दानिएललाई त्यो सिंहहरूको बिचमा फ्यालियो Il ne savait pas que Jésus lui-même, उनीहरूलाई थाहा थिएन कि येशू c'est le lion de la tribu de Juda. चाहिँ त्यो यहुदी जातिको सिंह हुनुहुन्थ्यो Ils ne savent pas que Jésus lui-même, उनीहरूलाई थाहा थिएन कि येशू ses yeux sont comme des flammes de feu. उहाँको आँखा आगो जस्तो Le राजा diable veut utiliser शैतानले प्रयोग ce qui ne lui गर्छ appartient même pas जे उसको हुँदैन त्यो pour कुरा nous faire de la peine. हामीलाई दुःख दिन Il veut nous enlever la vie हामीलाई दण्ड qui ne lui appartient même pas. जुन Alors que Jésus est le prince de la vie. जहाँ चाहिँ हाम्रो येशू Alors que Jésus est la vie. येशू आफै जीवन Si toi tu es हुनुहुन्छ ami avec la यदि vie तपाईँ जीवनको साथी हुनुहुन्छ et que celui qui veut t'enlever la vie, अनि जसले तपाईँको जीवन हटाउन चाहन्छ mais tu ne vas pas la perdre. तपाईँ त्यो गुमाउनुहुन्न Si Dieu qui est le Dieu qui répond par le feu, यदि त्यो परमेश्वर आगोबाट उत्तर et toi on veut te jeter dans le feu, र त्यो आगोमा चाहिँ मान्छे mais le créateur du feu, त्यो सृष्टि गर्ने त्यो आगो il est capable de changer le feu en rien. तपाईलाई त्यो Parce आगोलाई qu'il est au contrôle du feu. किनभने त्यो आगो On prend Daniel. परमेश्वर हुनुहुन्छ On dit, vu que tu es un rebelle, contre le monde, भएर on va te jeter vers le lion हामी तँलाई सिंहहरूको बिचमा qui हाल्छौँ était son ami, जो चाहिँ उसको साथी celui qui थियो, l'adorait. जसलाई ऊ महिमा गर्थे Judas, ça me veut dire quoi, la louange? यहुदा भनेको के हो En महिमा। fait, c'est comme, il est le lion त्यो चाहिँ de la tribu de Judas. उहाँ चाहिँ Il est le यहुदाका défenseur जाति हुनुहुन्छ des adorateurs. महिमा गर्नेको Il est le feu du सुरक्षा fondeur.
त्यो चाहिँ जलाउनेको आगो Donc quand on te jette dans le feu, जब हामी आगोमा हाल्छौँ tu es en train de louer le feu. तपाईँ आगोको महिमा गर्नुहुन्छ Est-ce que le feu va te brûler? के आगोले तपाईँलाई जलाउँछ Si toi tu es l'adorateur du lion, यदि तपाईँ त्यो सिंहको महिमा गर्ने ça veut हुनुहुन्छ dire que quand le lion te voit, जब त्यो सिंहले तपाईँलाई देख्छ il prend plaisir en ऊ toi. चाहिँ खुसी हुन्छ Quand le feu te voit, जब आगोले तपाईँलाई il देख्छ prend plaisir en toi. Mais quand on te jette dans le feu, तर जब तपाईँलाई आगोमा हालिन्छ mais tu dis c'est ce que j'adore tous les jours. म त यसको C'est celui que j'aime. म Jette-moi dans le feu. Le feu et moi, nous sommes un. आगो र म एकै हौ Le lion et moi, nous sommes un. सिंह र म एकै हौ On le jette dans la fosse au lion. हामीलाई त सिंहमा फेलिन्छ Les lions ont dit aujourd'hui, आज on jeûne. हामी सबैजना उपवास बसौँ Comme le roi est en train de jeûner. जसरी राजा उपवास बस्यो Comme nous sommes soumis au roi. हामी राजालाई मान्छौँ Si le roi jeûne, राजाले उपवास बस्यो nous भने aussi on jeûne. हामी पनि उपवास बस्छौँ Alléluia. Alléluia. Ils ont tous jeûné. उनीहरूले सबैजना Et le उपवास roi et बस्यो। ses lions. राजा र Ils ont उसको jeûné. सिंहहरू सबैले Pour उपवास que Daniel बस्यो। sorte de là. किनभने दानियल Alléluia. सिंहको बिचबाट Laissez-moi vous dire. मलाई भन्न Si दिनुहोस् tu donnes ta vie, यदि तपाईँ आफ्नो जीवन दिनुहुन्छ là où se trouve ton trésor, जहाँ तपाईँको là aussi se trouve ton cœur. तपाईँको हृदय त्यही ठाउँमा हुन्छ David était ami avec les lions, ils ont passé la nuit ensemble. Il était au chaud. त्यो दानियल La साथमा fourrure du बस्यो lion, c'était sa couverture. अनि त्यो सिंहको Dans la रौँले fosse. चाहिँ उसको Mais ओढे devinez बन्यो quoi? ओछ्यान। Quand le roi a fini de jeûner, तर जब David, où est Daniel, où es-tu? दानियल तँ कहाँ छ Il dit, भने, oh roi, me voici. ए राजा म यहाँ छु Tu savais que les lions, ce sont mes amis. थाहा छ कि Parce que je सिंहहरू loue मेरो le lion साथी de la हो, tribu de किनकि Juda. म सिंहको महिमा गर्छु Alléluia. आमेन। Et là maintenant, अनि le roi dit, bon, tous ceux qui t'ont mis dedans, जतिजनाले तँलाई यहाँ भित्र C'est हाले, leur tour. तिनीहरूको comme ils n'adorent pas le lion de la tribu de जसरी Juda, तिनीहरूले त्यो सिंहको महिमा ils vont गर्दैन, rencontrer le véritable lion de la tribu de Juda. साँच्चीकै त्यो Avant même qu'ils ne touchent le sol, la parole de Dieu est précise. Ils étaient mangés dans les airs. उनीहरूलाई हावामै खाइयो Alléluia. हालेलुया Ils étaient dévorés dans les airs. हावामै Ça veut dire que नष्ट les पारियो। lions ont dit, ah, भन्नु tu खोजेको n'as छ, jamais vu un lion manger sa proie en l'air. Vous savez que le lion est capable de soulever une vache. तपाईलाई थाहा छ Et de एउटा sauter une सिंहले, barrière. एउटा गाईलाई पक्रेर एउटा बार नाम्न Un lion सक्छ। est fort. एउटा Quand il सिंह grogne, डर हुन्छ, on entend à des kilomètres. कति किलोमिटर टाढा सुन्यो Tout le monde sait que là, il y a le lion. सबैलाई थाहा हुन्छ कि ए यहाँ त सिंह Et ils रहेछ ont voulu jouer avec le lion. अनि उनीहरू सिंहसँग खेल्नु खोजे Ils ont voulu jouer avec le feu. उनीहरू आगोसँग खेल्नु Et खोजे le feu les a consumés. आगोले Et तिनीहरूलाई le lion जलायो les a mangés. र त्यो सिंहले तिनीहरूलाई खायो Pourquoi? किन Parce qu'ils ont joué किनभने उनीहरूले खेले avec ceux dont le roi des rois जुन चाहिँ राजाका राजा est le roi. चाहिँ राजा हुनुहुन्छ La parole de Dieu dit le Seigneur est le Seigneur des seigneurs. बाइबलमा भन्छ उहाँ चाहिँ प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ Et il est le roi des rois. उहाँ चाहिँ राजाको राजा हुनुहुन्छ Personne ne peut subsister devant lui. कोही पनि उहाँको अगाडि अडिन Tout genou सक्दैन fléchit सबै घुँडा टेक्नु à la पर्छ mention du nom de Jésus. उहाँको येशूको नाम भन्दा Mais laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनु Jésus a dit, येशूले भन्नुभयो tout genou fléchit. सबैले À la घुँडा mention टेक्नु de son पर्छ त्यो नाम भन्दा Et devinez où est-ce qu'il habite. अनि मलाई भन्न दिनुहोस् उहाँ कहाँ बास गर्नुहुन्छ Il habite en toi. तपाईँभित्र Il a choisi de faire de toi sa demeure. तपाईँमा आफ्नो घर बनाउने निर्णय गर्नुभयो Il a choisi de